किमपुण्डमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम् सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। मतलब है बेरिया बक बक सुनिए तुम ही राम जी श्याम जी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे माधुरी को देखे आपके दिल में हुआ धड़क, आए हैं हम दो आलतू फालतू करने आपसे बेरिया के बक बक। तो हो आप पंजाबी करने का तमिल या मलू। अरे या आपके नाम हो राबड़ी प्रसाद या लल्लू। सवेरे शाम 5 बजे को होती है हमारी बक बक चालू। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। You are listening to Radio स्वागत है D-Hotties, आपका the hottest and the आपके best फ्री का Indian radio channel to ever hit the airwaves. और हर शनिवार के शाम It's the sole and exclusive property of Radio D-Hotties and Mahima Creation दूर संचार के माध्यम से, और हम आपको ले चलते हैं एक संगीत सफ़र पे, संगीत यात्रा पे, जहां हम एक प्रसंग थीम पे आधारित एक गीतों की श्रृंखला आपके लेके आते हैं और आपका मनोरंजन करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ एक संदेश पे चर्चा करते हैं और एज दे से ड्राइव द मैसेज होम। सो आज पुनः हम आपके सामने उपस्थित हैं और एक नए प्रसंग के साथ, एक नए थीम पे आधारित एक नया कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं। एंड आई हैव माय को होस्ट जैकी विद मी। सो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट ईगो, और उसको हिंदी में कहते हैं अहंकार। एंड विल एज द प्रोग्राम मूव्स ऑन विल टॉक मोर अबाउट इट। सो कहने को तो डिक्शनरी में देर आर फ्यू डेफिनेशंस on what an ego is, but the simple ones are your idea or opinion of your own self, or the feeling of especially your feeling of your own importance and ability, or kabhi most like it's an inflated feeling of your pride in your superiority to others. And जैसे हम we are human beings and we talk about like human psychology. So in psychoanalysis it's also said that it is a part of a person's mind that tries to match the hidden desires or the wishes of your unconscious mind to the demands of the world. So this is a psychoanalysis definition, and we have an expert, resident expert here. We'll talk about more because I am just at a very, very, very low level here, or maybe high level, sorry, not the low level. But like they say, the ego isn't any one specific thing. It's actually a mix up of many different beliefs that we acquire over a period of time. As we grow up, we acquire a lot of things, and those desires kind of constitute your ego. And just like most of the things, those beliefs can be diverse and even contradictory. So you have a contradiction with what you really believe and what sometimes you lean towards or what you really want. And to further complicate, everybody is different. So everybody's ego is different. So just like everybody is different. So that is kind of definition of ego at a very, very, very high level, and we'll talk about more about it. And when we talk about ego in currently in the modern society, it has got more of a negative trait to it. So when we say somebody is egoistic, or he has an ego or she has an ego, so mostly we talk about all the negative traits we have or what bad it can cause. But we'll talk more about it. So Jackie, you want to say anything about what you think an ego is and how it Good evening. First of all, I want to say hi to Mr. and Mrs. Board member. Today we miss you very much. I wish you guys were here to join us. Ego yeah okay yeah ego is
ego to me is like you have to think about your actions. Like is it if you want to do something now or you want to wait. And it's also your personality. When you are growing up, we had different egos going around. I feel like communication is part of ego. My mom tells me that my ego is I like to do things that is fast, and I learned during the pandemic to slow it down, to take it one day at a time, and to treasure each moment one day at a time. And my ego is how to deal with my emotions and anxieties and work on it day by day. And I feel that that's a very important aspect in life, and also in life, and we all have different egos. Everybody has a different personality, but we all can come together as one to build the community. Wow. Thank you so much for sharing that on camera, Jackie, and your views are so well put. And you shared your own, what your conversation you had with your mom. So thank you so much for that nice definition and introduction, and also sharing your own viewpoint. So thank you so much. So आज हम ईगो पे आधारित और अहंकार पे आधारित आपके लिए एक शो लेके आए हैं, और बातें तो बहुत होंगी, बट आज कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम यहाँ आमंत्रित करेंगे मेघा जी को. मेघा जी, प्लीज़ कम एंड वेलकम टू द शो आफ्टर अ लिटिल ब्रेक. Thank you so much. सो एनी व्यूज़ यू हैव ऑन ईगो, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं? So sometimes ego can hurt you when it becomes pride की तरफ जब अब चला जाता है, बट थोड़ा बहुत अपने आप पे गुरूर अपने आप पे होना भी कभी कभी अच्छा होता है, बिकॉज आई समटाइम्स फील कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक ईगो का लेवल तक थोड़ा तो रखना चाहिए, बिकॉज नहीं तो क्या हो जाता है कि पीपल ओवर रन यू. सो उतना हमें रखना चाहिए, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि सो दैट हम किसी को हर्ट कर दें या उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर दें, बट अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और उतना तो थोड़ा होना चाहिए. एवरीथिंग कहते हैं ना कि हर चीज़ को मोल तोल के यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ द वन थिंग आई वेरी ट्रू. थैंक यू सो मच. सो लेट्स हियर, आर वी रेडी आल्तो? या, सो जो आपने बात कही वो आई थिंक आई विल टॉक अबाउट इट आफ्टर योर सॉन्ग. सो थैंक यू फॉर दैट फीडबैक. सो हियर वी गो. थैंक यू.
घबराता मैं जाऊं कहाँ, कितनी भी आई है कैसी बेताबियां, मेरा दिल घबराता है मैं जाऊं कहाँ, मेरी बेचैनी ले जाए मुझको कहाँ, मैं हूँ एक पल यहाँ, एक पल यहाँ, मैं हूँ एक पल यहाँ, जो बावली जो बन चली, सपनों की है दुनिया जिसमें तू है परी, मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं, पगली हवाएं मुझे जहाँ भी ले जाए, हवाओं की सहेली मैं। शबनम कभी हूँ मैं कभी हूँ शोला, शाम सवेरे सारंग मेरे, मैं भी नहीं जानू आखिर हूँ मैं क्या। थैंक यू सो मच। Wow, it's a tough song to follow, and well done, Megha. Thank you so much. A nice opening of the show, and again welcome to the show. और आपका पुनः स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं ईगो या अहंकार पे। So before the song, Megha ji touched about थोड़ा ईगो होना चाहिए और you should have confidence in you, otherwise people will just run over you. So that brings me at the point, जब मैंने लिखा कि what is an ego, so मैंने कहा कि it's very 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 high level, it doesn't even go deep enough. So we have our own Aldwaba here. मैं ऐसे कहता हूँ कि मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक, friend, philosopher and guide. So incidentally he is also a psychology major. So आज this is very important and we will get to the depth of what an ego is. So जैसा उन्होंने कहा ego होना चाहिए. So the whatever text I put, that had a flaw, which only Aldwaba caught. Oh my God. Because I will ask him to define that. Why? Because the ego itself is not bad, right? It got negative traits. So Aldwaba, the other day you were saying the Sanskrit definition of that. So can you share that? And then we go into what is missing from the write-up I had. No, nothing. No, I don't want to say much because I have Jackie sitting right here who's policing every single word I say. She probably has a mental clicker going click, click, click on every word I say. Please wear So your glasses and No, please. वो अद्वैत में जो कहते हैं, please say that. I want to hear that. अद्वैत में क्या कहते हैं? अद्वैत वेदांत में. वेदांत में क्या? नहीं, I don't know. No, he. आप ऐसे मैंने बस ये बताया कि हमारे फिलोसफी हमारे कल्चर में Yes. अहम बोलते हैं Yeah, and ego and there's also tat tvamasi Yes, is that's one the thing. one. So Yeah. tat tvamasi means tat is that, tvamasi is you. Yes. So if you look at it, this is one and the same. So Yes. the point is in psychology, Western philosophy, Western psychological science, you say if you're a Freudian, you'll say id, ego, and superego. Yes. The point is ego is you. So nothing bad about ego. Yeah, yes. Right? Correct. It is. If you don't have ego, you don't exist. Yeah. So thank you And, for that. हाँ, because हम लोग the reason आपने अहंकार लिखा वहाँ पे, I understand, but अहंकार does not define ego at all actually. Well, it says Because English में ऐसे हम लोग loosely कर देते हैं कि ego, Yeah, but correct. We don't know English sir. जितना भी बड़े लोग Yeah, हैं, yeah, absolutely. there I is agree. somebody else or they're telling something else about ego. English is a very funny language anyways. But sorry, आप continue करो. Otherwise, Yeah. So what I was going to say is the ego itself is not bad, and ego defines you. जैसे उन्होंने कहा तत्वमसि, thou art me. So that is me. But जैसे आज के modern ज़माने में ego, as we see that, and an ego, if you go back and read about it, the ego itself is a Latin word which means me, I. So वो वहाँ से निकला है. But then, of course, into terms, mostly it gets a negative trait because it's tied to mostly negativity about ego. Or just बोलते she has an ego, he has an ego. So it's mostly everybody has ego. But जो आज जो प्रयोग है मॉडर्न आधुनिक ज़माने में, आज के ज़माने में, so that प्रयोग mostly means negative traits. But ego itself is not negative. You are what you are, and you as your basic attribute of you
And I think it's beautifully lining up, Aldoba. We talked about the identity, we talked about perspective, and now we're talking about ego. So is very nicely tying up with जो हम बात करते हैं कि talking about जो सत्य है और गहन सत्य है, and we talk about philosophy here. So yeah, so ego itself is not bad, जैसे मैंने कहा, but तो आगे हम बात करेंगे. And then today when you see about hear most about ego, that mostly means, जैसे मैंने कहा, it's turns about negative, and then with negativity it is caused by your emotion. So जो कहते हैं कि there is a system of belief and justification that kind of revolves around your ego. So when you say, when people say, oh yeah, this happened but I didn't do it, so we try to defend ourselves. So that is your justification and your belief that you didn't do anything wrong. So that is kind of a manifestation of, in modern times, how the ego is seen. But it's very much part of your own character and attribute and the beliefs which you acquire over a period of time. So that we'll talk more about it. So for the next song, we invite Vishal ji. Vishal ji, स्वागत है आपका. थैंक यू. और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा लग रहा है, हमेशा ही अच्छा लगता है. And belated happy birthday to you. Thank you. And any views you have on ego, कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? आपने तो इतना कुछ शेयर कर ही दिया है, तो ईगो के बारे में. No, okay, I'll spin it around. So आप काम करते हैं, right? ऑफिस में. So yeah, of course there are in we can say the example of co-workers. We go in meetings. So many times we have some difference of opinions, and sometimes it kind of turns out ugly. वैसा कुछ आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा होता नहीं है मेरे साथ एक्चुअली, क्योंकि आई फील लाइक आई एम काइंड ऑफ इजी गोइंग. तो मैं रखता नहीं हूँ अपने दिल में, दिमाग में कोई चीज़ रखता नहीं हूँ. आई जस्ट स्पीक व्हाट आई फील, राइट. तो उसको ही आप मेरा ईगो समझ लो. तो वो बिकॉज अगेन यू सेड दिस इज जस्टिफिकेशन, दैट इज माय जस्टिफिकेशन, दैट आई डोंट फील एनीथिंग, आई डोंट कीप एनीथिंग इन माय माइंड. तो आई जस्ट कीप दैट एज माय ईगो, राइट. But it can be also my self-respect. Yes, right? Very true. It's not necessarily a negative trait, but if you think it is my self-respect, so that is what it is. Thank you so much for sharing, Vishal ji, and let's hear a nice song from you. Sure. Take it away. When Altu Baba is ready. आएगा बंधुजन, आएगा. बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, हे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया.
हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। में नहीं है आज मेरा सा दीवाना, प्यार वालों की जुबां पे है मेरा ही तराना। सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। है अदब से शाम देती है सलामी, गीत झुकते हैं लबों पे, सांस करते हैं गुलामी। वो कोई पर्दा हो या बादशाह, आज तो सभी है मुझ पे फिदा। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। उठा दूं मैं जाऊं जिधर से, जीत लेता हूं दिलों को एक हल्की सी नजर से। महबूबों की महफिल में आज छाई है मेरी ही अदा। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। थैंक यू। Good job, your daddy. थैंक यू। Thank you, Vishal ji. Well done. So, thank you so much for that. So, जैसे हम बात कर रहे हैं आज अहंकार पे, so we're talking about ego and what it is and how it affects you. So, in today's term, like जैसे कुछ देर पहले मैंने कहा कि ego itself is your own reflection and it is you, but it's not necessarily bad, but in today's world, when we talk about ego, it mostly means it brings a lot of negativity with it. Because when we say somebody has an ego, we always mean that
something, there's a wrong which happened because of somebody's actions. And many times it happens that you are fighting your ego, because just like there's a perspective of putting things, you want to put things in perspective, and most important quality or attribute or skill somebody can learn in this life is how to put things, have a balance between, right, in like a balance between family and friends, balance between your own better half and your in-laws, or in any setting, they're in a business environment, um, like having a parity between different stakeholders, different shareholders. So in any setting, keeping a balance is a very, very important attribute or quality to learn. So ego in these terms, like when you let go of it, mostly it will pull you in the direction which maybe is not desired. People will not see you in a positive, as an image or positive trait you have. It mostly means like, you are kind of self-appeasing, and you always think about yourself, and you put yourself above somebody else or somebody else's well-being or interest. But as I said, as we learned a little while ago, that ego itself is not bad. But what we need to be mindful and careful about it is that you cannot get rid of your ego, even if it's however you think that, I need to destroy this or get rid of it. But it is an inherent part of you. What you need to do, or at least you all make an effort so that we can control that, because it can become a strong desire if it leads to like a superiority complex, or when we say whatever you say is to be followed, kind of a my way is a highway kind of analogy we have. So we need to try or make an effort to control that urge or desire, so that you, like when we accept people and you are in a setting where you want to be mindful of the wishes and likes and feelings of others and emotions of others. So yeah, of course, what you believe has its importance, but at the same time, the other person has an equal right and equal expectation that he or she is heard, and her wish and her inputs are also given the same amount of importance. So yeah, ego is you, but we should try to keep a balance, try to urge, make an effort to keep that strong desire. If you have one of the stronger kinds, put the things in perspective, control it. So yeah, so that is what ego and a message we are trying to pass you. So कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ मदद करेंगे विभा जी को. विभा जी, स्वागत है आपका. एंड आपके कुछ विचार ईगो के ऊपर, जो अहंकार होता है, बिकॉज इन लाइफ, एज आई सेड, लाइक इट्स नॉट समथिंग you acquire overnight. It's like over a period of time. Right. So different जो फेज हमारी लाइफ के होते हैं, अलग अलग जगह में the way you act and interact with people is different. So कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ जी, I'll share a true life story with you. Actually, this is going back maybe a year, and I was having a conversation with Altu Baba and Faltu Rani about ego. I still remember this, and I was telling them that once I was sitting in the car with my husband, my daughter, and a friend of ours, Lisa, and we were all talking, and we were just having a discussion, and at that point, I think my friend said, she said that of the four of us in this car, Vibha has the smallest ego. So in other words, even Jaina, she was very young then, according to her, had a bigger ego. And then I said, I don't know how I feel about this whole ego thing. And then I think Altu Baba, just like what you said earlier, he said,
He said, no, Vibha, everybody has a bit of an ego, and it's important for that very reason we all discussed, which was otherwise people will walk all over you. So it is important to have a bit of an ego, ताकि आपका जो वजूद या identity है वो बनी रहे. नहीं तो you're going to be lost. You're not going to know who you are, what you are. So I just thought that was interesting. So I just wanted to share that with all of you. Yeah, thank you. Hanji. Thank you so much. Thank you Hanji. for sharing that. So we'll Sure. hear another nice song. And of course, there are, you need to be really looking and listening to the song and looking at the lyric to find out songs on this It's thing. tough. This was a And little yeah, difficult. it's tough, but Especially for some of us, because I don't know, I don't like telling myself I'm the best. I don't think I am. But anyway, this is this song. no, yeah, correct. For I've- you are the best. I don't know even about that. But I want to dedicate this to my mom because she loves this song and she loves Shah Rukh Khan. So, Thank you. Ma, I know you're going to watch. This is for you. कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है. कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है. मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों. I'm the best, 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 I'm the best. दोस्तों, मुझे तुम देख लो, मैं नंबर 1 हूँ. कोई काम हो, तेज हूँ, बड़ी स्मार्ट हूँ. मैं फिर भी नेक हूँ, ये तुम भी कहो. किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया. मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों. I'm the best, 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 I'm the best. अजब जादूगरी कि मुझसी चार्मिंग कोई है कहाँ. क्या करूँ, है दीवाने मेरे, कहे मुझे डार्लिंग सभी लड़कियाँ. कोई ऐसा यहाँ, कोई वैसा यहाँ, मगर कोई नहीं मेरे जैसा यहाँ. मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों. I'm the best, 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 I'm the best.
it again. Nice. Thank you so much. एंड विपुन जी ये आपके लिए था, तो आशा है आप सुन रहे होंगे और आपके लिए ये डेडिकेशन थी. सो आई होप यू विल लाइक इट. सो आज हम बात कर रहे हैं अहंकार, ईगो की, और इस पे आधारित हमने कुछ गाने आपके लिए पेश किए और आगे भी आपके कुछ हम आपके लिए गाने पेश करेंगे और बातें भी करेंगे. सो अगला जो गाना है वो आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ. और देयर आर फ्यू सॉन्ग्स where somebody can dedicate to themselves. So ये जो गाना है आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा इस kind of song I'm dedicating to myself. but so in the name of ego नहीं है, but मैं प्रयास करूँगा कि ये जो गाना है वो मैं स्वयं को समर्पित करूँ और कभी सुनूँ उसको. So get ready for that. Because इसमें जो है, but actually जो आप सुनेंगे तो पता लगेगा, जो नाम लिया जा रहा है वो एक्चुअली वो जो उसमें जो घोड़ा है, अश्व है, उसका नाम है. But I think that there's a message and then nice song. So Alto, are you ready? Thank you. राजू चल राजू, राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू कोई जिए या मरे, क्या हमको बाबू. राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू कोई जिए या मरे, क्या हमको बाबू. माना के हंसी है दुनिया के ये मेले, अब तो हम रहेंगे मेले में अकेले. माना के हंसी है दुनिया के ये मेले, अब तो हम रहेंगे मेले में अकेले. जब तक ना हो जाए अपना दिल बेकाबू. राजू चल राजू, राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू कोई जिए या मरे, क्या हमको बाबू. जग में जो बुरा है हम देखे ना सुने, कांटों को हटा के फूलों को हम चुने. जग में जो बुरा है हम देखे ना सुने, कांटों
वालों को हम चुने, सब दुनिया बेगानी, दो अपने मैं और तू। राजू चल राजू, राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू। कोई दिए या मरे क्या हमको बाबू। परियां ये कहाँ से चली आई गाँव में, आए नींद आए जुल्फों की छाँव में। परियां ये कहाँ से चली आई गाँव में, आए नींद आए जुल्फों की छाँव में। हम पे ना चल जाए इन जुल्फों का जादू। राजू चल राजू, राजू चल राजू, अपनी मस्ती में तू। कोई जिए या मरे क्या हमको बाबू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। सो जैसे उसने कहा कि अपने घोड़े से इन दिस मूवी दैट कोई जिए मरे चलते चलो, एंड हु केयर्स एटीट्यूड था उसका। सो और उसमें धर्मेंद्र जी थे, एंड ऐसे काइंड ऑफ व्हेन यू सी जो हीरो होता है, प्रोटोगनिस्ट होता है, ही गोज एंड प्रोटेक्ट्स पीपल, बट उसमें ऐसा दिखाया गया था कि ही केयर्स लेस। कुछ हो रहा है जो होने दो, लाइक, एंड देन यू जस्ट गो ऑन योर हॉर्स, और कोई जी या मरे चलते रहो। सो या दैट वाज अ सॉन्ग, एंड इंसिडेंटली डेडिकेशन टू माई सेल्फ, वो अंदर की बात बाद में बताएंगे, बट या इट वॉज काइंड ऑफ डेडिकेशन। बट हाँ, आज जो बात करें ईगो, सो अब जो हमारे रेसिडेंट एक्सपर्ट हैं, तो लेट्स गो इनटू मोर डिटेल ऑफ इट। सो जो ईगो होता है वो लाइक दाउ व्हाट यू और तत्वमसी जैसे बोले उन्होंने कहा, बट साइकोलॉजी में देयर वाज अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट। सॉरी हाँ, जो भी है, हाँ बोलो। It's not thou art you, it's thou art that. That is tat. Oh, okay, thou art that. Pharmacy is you, so you are that. If you're looking for the that's you. So that's what they're saying. That's you asked about Advaita philosophy. That's what I told Yes, you. yes, yes. You can't differentiate. It's something which is indivisible. Oh, So okay. that's what it is. But again, आप ego की बात करें तो ego is also a mental Yes, image of yourself. absolutely. It's a man-made construct. Mhm. कोई ज़्यादा ये नहीं है, टेंशन मत लो उसके बारे में। No, I want to educate the people here because जो एक साइकोलॉजी मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको कुछ लोग पसंद करते हैं, बट मोस्टली पीपल डोंट लाइक हिम बिकॉज द काइंड ऑफ theories he had and he said all kind of things, but at the end of the day he did some research. उनको नाम था फ्रॉयड, and he कभी-कभी उनको पढ़ते लगता है कि what kind of person is this, all kind of nonsensical things, but yeah उनके बहुत सारी थ्योरी हैं। तो उन्होंने ऐसे बहुत डिफाइन किया था, जैसे कुछ देर पहले आल्तो ने कहा था कि वो आईडी है, ईगो है, सुपर ईगो है। सो आल्तो कुछ बताएंगे ईगो और सुपर ईगो में क्या भेद है, बताइए। एंड देन नो भेद देखिए सर, आप इतने हल्के से ले लिया फ्रॉइड को। फ्रॉइड हल्के से नहीं, रेस्पेक्टफुल, फादर ऑफ साइकियाट्री, फादर ऑफ साइकोथेरेपी, एंड उनके ऑफ कोर्स हिज
Sigmund Freud was he was one of the guys who actually was also the uncle of one of the guys called Joseph Campbell, who actually was Carl Jung. Carl Jung was a person who actually was who you have to definitely thank, because he was student of Freud, but he came up with his own philosophy, with something which is very interesting. He talked about the universal unconscious. So the super ego is nothing but your morals and your standards. Okay. And ego is what you do, is you, right? And then there's the id, which is the monkey in the brain, that kind of thing. So that's what it is. So again, it's all a man-made construct. जो भी हो जाए, आप बस आपने धुन में रहो. नहीं, हम कुछ तो रहो. आपने बोला राजू चले बाजू, right? Oh, राजू चले राजू. So that's not the case. I think it's more like understanding the fact that either you follow this philosophy or you follow that philosophy. एक philosophy लेके पकड़ो if you want to, and go with that for sure. राइट. बट यहाँ हम बकबक करते हैं, तो बकबक में बकबक हम कर रहे हैं, तो या लव इज डेफिनेटली गाइडिंग प्रिंसिपल. बट जब बकबक कर रहे हैं तो वी शुड नॉट डू बकबक जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग बकबक. कुछ ज्ञान मिल जाए तो अच्छा है, तो इसीलिए मैंने ये कहा, और आगे भी आज मैं पूछूंगा आपसे. तो आगे बढ़ते हैं. थैंक यू फॉर दैट आल्तू बाबा. एंड वी कॉल कल्याणी हियर. कल्याणी, स्वागत है आपका. Thank you, Pranab ji. Did you enjoy that discussion so far? Oh, I loved it because it kept on saying the same thing over and over again. No, but it's true. You have to keep a balance of your ego and also know where to use it. And of course, everybody has to have a little bit of that because you can't do without it. But one thing I know that in order to keep your ego in check and not one thing is that to like apne jaise we believe in God, right? So if you like say that he's the one who did it for me, or you, what do you say, you dedicate it to him, right? Like because of him I did it. So that way you kind of lower your ego there and you don't go into pride and stuff like that. So very good point. Yeah. Because I know Altua will say something if I say. He will have several questions. So I don't want the 20 questions from him. But whatever I grew up learning and listening to my grandmother, उन्होंने ये कहा था कि जब जब पृथ्वी में कोई अहंकारी होता है, सो भगवान आते हैं. उसका जो वो होता है, उसको गर्व को खंडित करने के लिए, वो उसका जो मद है उसको चूर करने के लिए भगवान आते हैं. सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स. हम जैसे कंस थे, महिषासुर था, इवन रावण फॉर दैट मैटर, वेरी पॉपुलर विलन. तो डेफिनेटली जब ये अहंकार बढ़ जाता है तो भगवान आते हैं. सो या वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव the religion with us and the culture, the heritage to relate to. So thank you for that, bringing that point. And Altova से बाद में बात करेंगे, वो कुछ और गहरे ज्ञान में हमको बताएंगे. But do you agree, Altova? वो कलेक्ट कर रहे हैं सब. Okay, वो बाद में बात करेंगे. But घड़ा भर रहा है. हाँ, पाप का घड़ा भर रहा है. So yes, correct. So that is a very 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 good analogy, and we should be fortunate and take pride in that कि हम ऐसी कहानियाँ सुन के बड़े हुए हैं, and then we get lot of learnings out of it. So if not for anything, अहंकार को बढ़ने मत दो. So yeah, Kalani, take it away. Thank you. ठीक है जगह. जादू कोई
मस्ती दिल वाला ही बोली लगाए रंग खाए मेरा जादू कोई बच न पाए। थैंक यू। Wow, very nicely done, Kalani. Very nice. So this is one of those songs, very peppy number and very well done. Thank you so much. And she had a lot of fun singing also, and we had more fun listening to it. So thank you so much. And there was no, thank you. There was no ego in it, but जैसे गाने choose करने पड़ते हैं. But yeah, it had a little bit of it, but I know that's why I suggested, but yeah. Yeah, so like exactly, she can captivate anybody. So yeah. तो अभी जैसे हम रिलीजन की बात कर रहे थे, तो ऐसे ही भगवान भी इसे भेजते थे, कभी मेनका को, कभी और किसी रम्मा को, अप्सरा को, ऐसे ही अहंकारियों का जो मान गुरूर और घमंड तोड़ने के लिए. बट एनीवे, तो आज हम बात कर रहे हैं अहंकार की. एंड ऑफ कोर्स प्राइड इज वन ऑफ द वेरी वेरी important trait which we see in people that drives them crazy. But anyway, but घमंड होना भी चाहिए. You have to have this your self respect. But कभी कभी वो नेगेटिव ट्रीट में जाता है. आलतो बाबा बोलिए. सर घमंड नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास होनी चाहिए. या सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस. ओह या, वो भी सही है. तो अगर आप ईगो, मतलब आई अंडरस्टैंड यू वांट टू से अहंकार, बट आई वुड से डेफिनेटली वुड बी कॉल्ड समथिंग लाइक pride is what you should say. Pride or being proud, right? That's what it is. Ego would not be a perfect example or perfect equivalent to ahankar what we have in our Indian culture. Oh, okay. Point to be noted. Yeah. Thank you Aldo for that nice feedback. But yeah, जैसे हम बात करते हैं, तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं साथ में, तो हम कुछ सीख भी रहे हैं. Of course, except Alto, nobody is a resident expert here, so we count on him. और कभी कभी टांग की चाय भी करते हैं. बट है, मैं क्या कहूँ, बट आगे बढ़ते. हाँ बोलिए आलतो बाबा. अरे आप मनोविज्ञान पढ़े हैं इसलिए आप तो सही में पंप मार रहे हो यार, सही में. अरे चढ़ाओ झाड़ पे जितना भी चढ़ाओ, लेकिन क्या है कि हमारा वजन इतना है कि झाड़ झुक जाता है, हम चढ़ते नहीं चने के झाड़ पे. ओके, इसका जवाब आके फालतू नहीं देंगी. बट या आई थिंक मैं अगले गाने के बाद बोलूंगा. अभी आगे बोलते हैं और बुलाते हैं नरेन जी को. नरेन जी आइए, आपका स्वागत है. थैंक यू. आप भी वहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे थे. मैं तो ऐसे ही मुस्कुराता ही हूँ वैसे भी. तो अभी कुछ बताइए आप ईगो के बारे में, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे, कुछ विचार. दो चीजें हैं मेरे हिसाब से. मैंने कहीं पढ़ा है कि अटैचमेंट ऑफ माई सेल्फ ओवर रॉन्ग इमेज इज माई ईगो. ओके. सो लाइक मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा गाता हूँ और उसका मुझे अभिमान हो जाता है, रॉन्ग अभिमान. जैसे अल्तू बाबा ने बताया कि भी प्राइड होना चाहिए, बट अभिमान नहीं होना चाहिए. सेम थिंग लाइक यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट योर ह्यूमन बीइंग और अ नाइस पर्सन. हाँ दैट या अभिमान मतलब ईगो हो गया, राइट. बट दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईगो के हिसाब से जी किसी का नुकसान नहीं हो ऐसा करना चाहिए. क्योंकि ईगो कैन बी, जैसे आपने पता है कि आपके गाने में था ना, हु केयर्स, कि दुनिया मर जाए. बट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीबॉडी, फाइन, मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते. हाँ, सो उसके अदर साइड पे, हाँ बोलिए, उसके अदर साइड पे अगर ईगो है कि भी मैं मस्त बहारों का आशिक हूँ, जैसे मेरे गाना में है जी, और आई लव द होल वर्ल्ड, दैट्स एन गुड ईगो. So right. Ego can be negative and positive, but yeah, in any way, wrong ego is in hurt. वो आपको जला देता है, it burns you. कुछ नहीं. नहीं, आल्तो बाबा को मैसेज था, आल्तो बाबा कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो आत्मविश्वास होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए. सो इट्स ए वेल सेड. और हम यही आशा करते हैं कि आप जो घर में सुन रहे हैं, जो हम बकबक कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, आप उसका आनंद उठा रहे होंगे, और साथ ही साथ कुछ आप भी ये उसका चिंतन कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि
whatever they are saying, that it makes sense. और जो हम गा रहे हैं उसको ईगो मत समझना, खाली थीम है इसीलिए गा रहे हैं. But but if you like the whatever is being said and discussed here, please let us know. So ननन जी, आपसे एक ये धमाकेदार गाना सुनते हैं. Take it away. Let's say I can justify. Thank you. I'll try. This is hard song. हाँ, white shoes, white pant, yeah. मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों से चाहे से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं. सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए. मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों से चाहे से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं. सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए. मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ किसको है ज़रूरत तेरी ए जमाने, हाँ मेरा अपना रास्ता दुनिया से क्या वास्ता, मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जवां है मेरे लिए, मेरे लिए. मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों से चाहे से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं. सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए. मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, हाँ मेरी आंखों से जरा आंखों तो मिला दे, हाँ मेरी राहें रोक ले, नजरें तू बिछा दे, हाँ तेरे सर की है कसम, मैं जो चला गया सनम, तो ये रुत भी चली जाएगी, ये तो यहाँ है मेरे लिए, मेरे लिए. मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे गली से प्यार करूं. सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए.
सबको ये बता दो, कह दो हर नज़र से हाँ, सबको ये बता दो, कह दो हर नज़र से हाँ, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हाँ, बतला दो जहाँ को, समझा दो खिजा को, आए जाए यहाँ ना कोई, ये गुलसिता है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, 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 मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई डिड इट। Wow. Naren ji, you did awesome and we all had lot of fun. So ये जो गाना है कि ऐसे बहुत मज़ा आया, आपने बहुत अच्छे से गाया इसको and well done. So Jackie, you want to say something? Yeah. Please come. Yeah. So you can repeat what we have the theme today. Nahin, this is a difficult song. I will give you 100%. Wow. And I will give Vibha 20%. But yeah, उनको गाना अच्छा लगा. So I think Jackie, yeah, you have to be little Yeah. more kinder. Yeah, Vibha, I hope I can see you more at my path. And your daughter. But thank you so much for that, Jackie. And I will ask you. So yeah, so हम आज बात कर रहे हैं अहंकार के ऊपर, ईगो The और next. yeah, I'm going to and yeah, and during the course of what we discussed, बकबक जो हमने की, so we figured out few things that ego is not necessarily bad. Ego, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि ego is you. और आगे हमने बात किया कि सेल्फ रेस्पेक्ट, जो आत्मविश्वास है, दैट इज समथिंग यू शुड लुक फॉरवर्ड टू एंड यू शुड हैव दैट. बट जो गर्व है, घमंड है, वो नहीं होना चाहिए. सो दैट इज़ बैड. सो दैट इज़ व्हाट वी आर लर्निंग टुडे. सो ये जो बकबक करने में बहुत सारी बातें सामने आती है, ज्ञान मिलता है. सो ऑफ कोर्स मैं तो ऐसे बहुत कभी बात ही नहीं करता था, बट अब मुझे देखिए मैं बहुत बकबक करना हूँ. तो देर आर पीपल हु यू कम इन कॉन्टैक्ट विथ, और जो आपको प्रभावित करते हैं अपने जीवन से, व्यवहार से, और उनके जो कैरेक्टर होता है, एट्रीब्यूट होता है, उससे सबसे जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो गुण होते हैं, उससे आप प्रभावित होते हैं. फिर आपको लगता है कि हाँ, ये तो शायद मैं भी कर सकता हूँ. सो ऐसी ही एक जो शख्सियत है, पर्सनालिटी है, उनको हम आमंत्रित करेंगे, फालतू रानी को. Jackie, you want to say anything, something? So the next person I'll introduce is my IF, Kavita Strader. Fatirani Kavita Strader. So Faltarani, thank you for that, Jackie. Thank you for that nice introduction. So Faltarani, आपका स्वागत है. And आप जब अंदर थे वहाँ हमने यहाँ अपने रेसिडेंट एक्सपर्ट जो हैं, विशेषज्ञ, उनसे बातें बहुत सारी की. कौन है रेसिडेंट एक्सपर्ट? क्योंकि ये जो ईगो है वो मनोविज्ञान से आता है, साइकोलॉजी से. हाँ. और यहाँ हमारे मनोवैज्ञानिक हैं यहाँ पे, आलतू बाबा. तो उन्होंने बहुत सारे ज्ञान की बातें हमसे साझा की, शेयर की. और जो हमारे ज्ञान के चक्षु हैं, जो आईज वेर वाइड ओपन नाउ, और आंखें. सो हमें बहुत सारा ज्ञान मिला है. आपकी कुछ प्रतिक्रिया उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? किसके बारे में सर? एक तो मनोवैज्ञानिक जो है उनके बारे में, एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स जो आज की जो थीम है. क्यों बोलना है, आज तो ईगो है ना. ओके, इसको आउच बोलते हैं. बट एनीवे, फालतू ने बताई कुछ आपके. मेरे पास एक प्रश्न है, बट पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने प्रश्न बाद में पूछूंगा. पहले आप बताइए कि आपके कुछ विचार इन जनरल, जैसे लाइफ में ईगो मोस्टली गेट्स लाइक मोस्टली नेगेटिव ट्रेट्स, बट जैसे हमारे
रेसिडेंट एक्सपर्ट ने बताया कि ईगो इटसेल्फ इज नॉट बैड, बट जो घमंड होता है वो लीड्स यू टू मोस्टली काइंड ऑफ सेल्फ अपीजिंग उस मोड में ले जाता है. तो वी नीड टू बी वॉचफुल ऑफ दैट, माइंडफुल ऑफ दैट. आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? My mom used to say this, ki the moment you let the I go, that's when ego goes. Oh, nice, nice. So you have to let that. We become so self-absorbed कि लगता है कि सब कुछ अच्छा भी हो रहा है हमारे वजह से हो रहा है, बुरा भी हो रहा है हमारे वजह से हो रहा है, बुराई भी हो रही है तो हमारे लिए हो रही है. It's against me, it's against that. So we become so self-absorbed कि हमें ऐसे लगता है कि you know, we are the be all end all of the world, but we are not. Unfortunately, we are like such a small sliver in this entire existence that it's not all about us. Very true, very true. So तो इसीलिए जब हम लोग in fact at हमारा प्रज्ञा जो है, हमारे प्रज्ञा में जो है, what we always talk about is together is always better, because I am only in existence because you acknowledge me. You acknowledge me. I am what I am because of you. If you're not there, my identity doesn't really exist. If you're not there to acknowledge me, तो इसमें ego की क्या बात है? You know, हम आते हैं, हमारे माँ बाप ने कुछ किया, भगवान ने कुछ किया, हम लोग दुनिया में आए, right? So at the end of it, हम लोग जाते भी हैं तो हमारे बस में नहीं है. हम जितना भी करें, कुछ भी करें, अगर हम खुदकुशी भी करना चाहते हैं, just in case, I'm just saying, I know it's a terrible thing, but if it's not meant to be, you don't die. Think about it. If it's not meant to be, you don't die. Then sometimes you could plan till you die, but you don't really. You could live the most healthiest life, and then all of a sudden something comes. Who knows? A truck hits you and you're gone. हमारे बस में कुछ नहीं है. अगर वो समझ में आ जाए कि we are all, हम निमित्त मात्र पात्र हैं. सही बात है. सब ट्रक ड्राइवर के हाथ में. वो ट्रक ड्राइवर को भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं है. उसका स्टीयरिंग व्हील है. बट आई जस्ट थिंक ये ताकि मार के गया ना उसके हाथ में कुछ नहीं. I think at the end of the day कि ये जो ego shigo है sir, I think it just is something that's man-made. It's our own construct, and I think it's ridiculous कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे वजह से पूरी दुनिया चलती है, या हमारे तरफ, या हमारे it revolves around us. मंडराती है पूरी दुनिया हमारे लाइफ के हिसाब से. And that I think that it's not that it's indispensable. I'm not saying we're all one. I mean, we cannot. I cannot imagine that, you know, just because I'm not, you know, just because somebody is different from me, that by staying away from them or by being a certain which way to them, that my life and their life is not getting affected. It is, right? Thank you. So वही इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ईगो फॉर द कलेक्टिव ईगो, कलेक्टिव कॉन्शियंस जो है, वो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि वी आर मेरे हिसाब से, फॉर मी आई थिंक दैट्स वेयर यू नो इट्स अबाउट अस. इफ़ यू जो हमारे सनातन धर्म में भी है, जो सनातनी है कि वी से लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, राइट? We can, right? No, seriously, we do. Yeah. And there is a shloka that we say if you listen even in the prayer temples में जब आप सुनते हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, which means that may everybody, every sentient being be in peace and happiness, right? अगर हम लोग सब कुछ हम if we think that we are all one, then I don't think this ego, shigo and all this will come into place. So that's why you know, confidence is one thing, but egos thinking that we are all that is another thing altogether. You want to share something, Jackie? You want to share something, Jackie? So I also learned that from when my uncle passed last year,
is how we need to be more humble to one another, and how we need to grow with one another is by allowing people to come into your life and you come into other people's life. It is allowing them that we can all work together if we can put our differences aside and come as one as a community. Wow. Wow. Jackie, you were just rocking, and what a message it was. So we need to put our differences aside. So, and the differences means your big ego included in that. So yeah, Yes. not her, everybody. Okay. Yeah, claps for Jackie, of course. Yeah. Yeah, thank you so Yeah. much. Although, any comments you have? Oh no, you don't dare. No, Okay. no, why Altu Baba? But yeah, so thank you so much for sharing that, Falturani. I was just going to ask the question about when we talk about pride and ego, that is true for people of all abilities. That's what I have noticed, right? So that is one thing which there is no differentiation there. Right. That's we get that, and of course we have seen instances of that, right? Anything you want to share on that? No, I think ego is learned behavior. It is not something that I'll be honest with you. My main experience has been, a lot of experience over the past few years has been with neurodevelopmentally different people, and उनके साथ ईगो करके कुछ नहीं है. हाँ, उनके फीलिंग्स हर्ट होते हैं. दे आर ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस कि वो अपना इफ दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स बट सोचते नहीं है. माई फ्रेंड जैकी, राइट, एक बार अगर उसको बोलो कि ये गलती हो गई तुमसे, हाउ व्हाट अ बिग difference today, where she will not think twice and she will apologize the next minute. I'm not kidding. I'm really telling you, this is a huge deal. They don't, the moment they realize, there is no second thought. There's that remorse that is there, and the immediate thing, if they say something that is, sometimes we say things, हम लोग filter लगा के बैठते हैं, नहीं बताना, उनका feeling hurt हो जाएगा, ऐसे what? Completely derailed my thought. That was really funny. So anyway, Thank you. So I really think that ego jo hum log human beings, so-called neurotypical people, are the ones who are coming up with this concept. Very true. Thank you so much for sharing that, and thank you, Jackie, for sharing and giving us such a fantastic message. Now we're up to the song, so let's hear this beautiful song. Mombasa, ping pong. Wait. Akka chicka laka chicka laka chum chum. Appa chicka laka chicka laka chum chum. Akka chicka laka chicka laka chum chum. Appa chicka laka chicka laka chum chum. मैं ख्वाबों की दिल पे छाई, मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ दिल पे छाई. बादल है मेरी धूपें, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली की रातें मैं हूँ आई, बिजली की रातें मैं हूँ आई. कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा
हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई कविता कृष्णमूर्ति का फॉल्सेटो आवाज सुन ये कविता कुछ नहीं कर पाएगी समझे क्या नादानो मुझको बोली ना जानो मैं हूँ सांप की रानी कांटा मांगे ना पानी सागर से मोती छीनो दीपक से ज्योति छीनो पत्थर से आग लगा लो सीने से रास चुरा लो हाँ चुरा लो आहा चुरा लो जीनो जो तुमने बात छुपाई ओ जानो जो तुमने बात छुपाई कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई बिजली गिराने मैं हूँ आई कहते हैं मुझको हवा हवाई चिकी लकी चुच्चू रप चिकी लकी चिकी लकी चिकी चुम अक चिकी लकी चिकी लकी चुम चुम अप चिकी लकी चिकी चुम हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई बिजली गिराने मैं हूँ आई बिजली गिराने मैं हूँ आई कहते हैं मुझको हवा हवाई 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 गलती माफ करना बच्चा। क्या बात है I didn't फातून? get a chance to practice. मैं सोच ही थी करूँगी लेकिन नहीं हुआ. Thank you so much. Jackie, Sorry you want to about say that. something? Kavita, it was a difficult song, a high-speed song, but you did a great job. Whoa! Thank you, Jackie. Thank you, thank you, It was a very high-pitched song. You were in G major. thank you so much, Jackie, for that nice feedback. We look forward to your feedback. And sometime we are
kind of afraid that how bad or how good we, maybe I should say, how bad we did. So, but yeah, good that you have a good sense of music, and you know who sang well and who maybe found wanting. So thank you so much. And so आज हम बात कर रहे हैं ईगो अहंकार की. So now जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, in throughout the show we are talking about a resident expert who is a psychologist himself. हाँ. History of the song also has an ego aspect. Oh, okay. Tell us. So this song was supposed to be sung by Asha Bhosle, and Oh. Kavita Krishnamurthy only did a recording so that they could practice. But the song came out so well that Asha left her ego and said, "इसी की आवाज में गाने दो." Kavita Krishnamurthy also had made a mistake. जीनू जो तुमने बात छुपाई. correct. Director said, "Forget it. श्रीदेवी इतना अच्छा डांस कर लेगी कि कोई याद नहीं रखेगा कि जीनू Very है true. कि जानू है." Very और true, very Asha was so graceful that she said, "I don't care. This song has come out well." Wow. So left the ego. Nice for sharing that. Thank you so much. So now we come to the last solo of tonight. We still have more songs, but अब जैसे बात तो हो रही थी, कुछ लोग जल जाएंगे, but as I say, means जो मित्र सखा और मार्गदर्शक जो है, and सॉरी, मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड. सो अगर उसको मनोविज्ञान की डिग्री है, सो तो और भी क्या कहें. तो आज वी हैव काइंड ऑफ reached out deep into that pocket of knowledge. अरे सर क्या डिग्री, 45 degrees, 90 degrees? Thank you so much for 85 sharing degrees. all the मनोविज्ञान with us. And जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले कि हम जब बकबक करते हैं, बातें करते हैं, तो जैसे जो ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, परत दर परत, we start seeing more clearly. So thank you for sharing all that knowledge, Alto Abba. So आज now that you are on spotlight, share us. Wait, before yes, Jackie, the light sorry. switch is going to be there. Come on, light switch. Yes, turn it on. Enlighten us. The next person who is going to see is Kishan, ally and friend for Altu Baba. Oh, Altu Baba. Okay, Altu Baba. Please, now that you are on spotlight, share us. Of course, we talked about the knowledge and theory, all those things, but life lesson. You came across few things where you face some big ego or things like that. Share something. Please, something. What are you talking about, big ego? Okay, small ego. Something. I don't know what he's talking about. Exactly. What are you talking about? You experience, not you. I have an ego. I have an ego. Yes. And to me, ego is an identity. Okay. And nothing wrong with that. There's no bad ego, good ego. Okay. Ego is ego. Ego is ego. Exactly. And I also have an alter ego, but thank you so much for that. I have an alter ego. It's called Altu Baba. नया term है, alter ego. Yeah. So what do you do with alter ego? I alter ego, I alter things. I alter reality with things. That is My alter ego alters reality. Because reality is something which is again your mind construct. Okay. Sir, again, I tell you, you should not be too proud of what you are, because what you No, are. I'm not. No, I'm telling you, at the same time, you should be proud that what you are. You get my point? Because it's affirmation. You have to have affirmations in life. And Megha ji start kiya tha very nicely. She said you need to have. Yeah. She said you got to have. Ego is important. No, she said something very interesting. She said, अभिमान मान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए. But I would say अभिमान भी रखो, doesn't matter. Yeah. It doesn't matter at all to you. But again, स्वाभिमान रखो. That is the self-respect for yourself. Correct. That's very important. I also would say that ego is identity. So what you are is what you define yourself to be. If you think you're going to be the best, I am the best. And I am the best. I'm not kidding. I'm not the best of what I can be. I'm not comparing with anybody else. Right. मैं कल से बेहतर हूँ अभी आज. Oh, okay. You have improved since yesterday. I always have improving. Very good. I always tell people I'm not there yet because I believe I'm a work in progress. And I'm bettering myself every second. Wow, Alto Abba. Every second, every day. And thanks to all you people out there. आपकी वजह से मैं better होता जा रहा हूँ. Is what I feel. You think so? Okay. Faltarani, can you have some feedback on that? He says he's getting better every day. That really doesn't matter to me because
that really doesn't matter to him because I am my best audience. I am my best person, and I am the best judge of myself. I don't give this to anybody the opportunity to judge me. Or No, it's not about judging. No. For I don't want anybody else's confirmation that how awesome I am. I am awesome. तो आगे करते हैं बाद. Let's play the song. Yeah. So. तो फिर आलतू बाबा तू कौन सा गाना गा रहा है? मैं. I'm the best जो तुम्हारा flagship गाना है. I am singing the song of two double impact, मतलब two November 2nd bonds. Oh wow. Music by the November 2nd bond, acted by Malik. November 2nd bond, sung over here by a November 2nd bond. Whoa. And Triple धमाका. also I have to add, जैसे बोलते हैं कि जो बादशाह होता है, बादशाह, अब बादशाह. what does he do? He rules. So ऐसे ही जो हमारे मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं, हे भगवान. he rules our heart. So वो ruler हैं, but he rules our heart. So thank you, Alto This part Baba. of the program brought to you by the paid, But that is true. I single think member not Alto just Baba fan club. not just our heart, but many hearts. So yeah, take it away. Sir, actually आप मुझे प्रशंसा ना करें. एक मिनट होल्ड कीजिएगा. मैं बताता हूँ. अब बोलिए. आप मुझे प्रशंसा करना छोड़ दीजिएगा. Okay. Even if you do it, to me, Okay. my प्रशंसा I do myself. Okay. And criticism also I take it to myself only. मैं किसी और को opportunity तक की affect करेगा. एक बात पे चाय हो जाए. Thank you so much. Love you. Hey, but there is something we need to add. Even if you don't praise me, I will still love you. That's all I can tell you. See, Hey, Jackie never praises me. Jackie is very careful, but still, she knows I care for her, right? No, Alto Baba, there's one more thing you forgot to add. Yeah. Even if you don't praise him, even if you criticize him, he still loves himself. That's true. Yeah. Yeah. जो Yeah, he बंदा loves- सवेरे उठ के आईना देख के awesome man लगता था ना. Oh, that reminds me of something which I wanted to share, which I will maybe this is the right opportunity to share. We just said about reflection. So reflection, there was a theory or some legend also that there was this guy called Narcissist, I think. What was his name? I forgot. And then he saw a self-reflection in mirror and he fell in love with himself. तभी जो word है narcissism वो वहीं से आया है. So yeah. So narcissist was self-absorbed. Yeah. I am not self-absorbed. I look at my image and say wow and walk away. Okay. When you love something, you gotta let it go, right? You know what? जब कुछ प्यार करते हो उसको कभी you should never hold on to it and say stay with me. You gotta let it go. It'll come back to you. But you should not say I want my love to be with me. No, you can say let it go. Baba. So if I love myself, I let myself go. Wait. But this is the moment I need to walk away. आशिक हूँ मैं कातिल भी हूँ सबके दिलों में शामिल भी हूँ. ताली बजाइए. अच्छा लगा तो बकवास फिल्म था लेकिन फिर भी गाने अच्छे थे. अनु मलिक मूवी स्टारिंग अक्षय कुमार's wife before she was wife. अच्छा आशिक हूँ मैं कातिल भी हूँ सबके दिलों में शामिल भी हूँ. आशिक हूँ मैं कातिल भी हूँ सबके दिलों में शामिल भी हूँ.
दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुखरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। Live a life without fear is the message here. आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुखरता नहीं जाकी, मरने से मैं कभी डरता नहीं। समझ लो जाकी, अंडरस्टैंड? I just said I don't break promises. I try not to break promises. I break my own promises. That's okay. तरफ है मेरी ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। रंग भरी सुबह मेरी, मस्ती में डूबी है मेरी शाम। झूठी कहानी सच्ची लगे, आवारगी मुझे अच्छी लगे। नगमे सुनाना, सबको नचाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपनी मुखरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। कैमरा पे दिखा नहीं लोगों को फुटवर्क, नया कैमरा चाहिए फुटवर्क के लिए। पैनिंग कैमरा। ये मोहब्बत कमजोरी मेरी, चाहत की दुनिया पे मेरा राज। बस रब के आगे झुकता मेरा सर, झुकते मेरे सामने तक तो ताज। अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाह का बादशाह। सपने सजाना, हंसना हंसाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपनी मुखरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। Everybody now! आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपनी मुखरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। Everybody now! Come on, Jackie, come on stage! Jackie, come on. How was that, Jackie? Yeah. Awesome.
Kavita said, awesome. Take Kishan, that's your best performance. You danced. It was fun to watch, and you should do it more often. Thank you so much, Jackie. So you loved the performance. Thank you so much. Alright, तो आज अब हम- युगल गीतों में चलते हैं. Yes, आज हम बात कर रहे हैं अहंकार की, ईगो की, and as we did lot of soul searching and बातें की यहाँ, बक किया, तो we found that ego is not bad as it gets the most negative publicity today, that ego is mostly associated with negativity, but it's not the case. Ego is you, and what we learned today was having self-respect is important, but having pride, स्वाभिमान रखिए but अभिमान मत रखिए. So वो that is the message today we want to pass, that it's important to have self-respect, but it's not okay to be self-obsessed and then self-absorbed and do anything where you drive only your wishes and beliefs over others. So that is something we should watch out for, because that is inherently present in everybody, and of course some get that awakening and vision to watch out for that, and they are, we can say, better equipped. But of course, just as most things, everybody struggles with one thing or the other. Nobody's perfect, except somebody will say that but yeah, it's an important message here that we need to be mindful of that feeling of self-obsession, and just we talked also about that the together is better, so the acceptance and to acknowledge that everybody is different, and appreciate the differences, and then you will find out that you will be also appreciated the same way. So आगे बढ़ते हैं और यहाँ अभी युगल गीतों की श्रृंखला शुरू करते हैं, और we first want to call on Vishal ji and Altu Baba. Oh, yeah. Auntie Baba and Rochelle gonna sing. Rochelle, you will sing a duet for Jack. Oh, okay. So this is kind of Thank you. dedication to Jackie. It's not dedication, I would say. It's a special request. She always Oh, okay. Special wants request. me and Kishan to sing more songs together. To Altu Baba and me sing more songs. Vishal ji. Okay. Wow. Oh, I'm so Awesome, impressed, Jackie. Thank you. Jackie, what we can say is every day I see something new and delightful in you. Yes. Thank you so much. Thank you, Jackie. And you made today Jackie everybody ji, bright. thank you. And we can say Jackie G also for Yes. that matter. So Altu Baba, please come, Yeah, and he'll come. we want to hear this beautiful song. So आखिर इस गाने का नंबर आ ही गया. Oh, we tried to sing a song for you last week. No, week before last week. हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा. हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा.
लड़की देखी मुँह से सीटी बजी हाथ से ताली, लड़की देखी मुँह से सीटी बजी हाथ से ताली, साइला आइला उपमा आएगा पोरी आले आले। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। Can't see the awesome footwork I'm doing. गाल गुलाबी नैन शराबी होश डाले जाए, उफ कयामत से निकले हाय। सोते जगते लड़की देखो दिल धक 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 धड़के, देखो फड़ के आंख मेरी तन में शोला सा भड़के। लड़की लड़की करते करते हो ना जाए दीवाने, ऐसा ना हो जाए कि हम खुद को ही ना पहचाने। वार मेरा जब भी होता है कभी न जाए खाली, हर ताली की रखता हूँ मैं कभी चाट के चाबी। लड़की देखी मुँह से सीटी बजी हाथ से ताली, लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली, साइला आइला उपमा आएगा पोरी आले आले। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। या गुजरात की हो, या पंजाब की हो, या अनुमली की हो, या किसी और की हो, हमें की हो, हमें लेकिन रोटी रोटी बना Do you like it? Do you like it? Yeah. छतरी वाले के भी मन में खूब समाई, क्या सोचा जो उसने लड़की जैसी चीज बनाई। चिकनी चिकनी देख के सूरत दिल ये फैसला जाए, लड़की नहीं बनाता तो बोलो रंग। तोबा तोबा इनकी जलवे इनकी अदा निराली, दिल करता है चूम के दिल में रख लूं एक दिल वाली। किसी एक का हाथ पकड़ के बना ले उसे घरवाली, हर दिन तेरा बने दशहरा रात बने दिवाली। है लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुँह से बजे हाथ से ताली, साइला आइला उपमा आगा प्योरी आले आले। तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली, साइला आइला उपमा आगा पोरी आले आले। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। Wow. That was a really good performance. Yes, Jackie. You That want to was a good, really good performance, and I really enjoyed it. And I hope you guys do it again. Wow. Thank you so much for the nice feedback, Jackie. And we look forward to your feedback after every performance. So, thank you so much. So, आज हम बात कर रहे हैं ईगो अहंकार की, जैसे हमने आज बात ही की, and then through the discussion we
Oh, sorry. 1 minute. Alto Baba, that is in Mera Gana, so you can find that. Yeah. So the key takeaway so far, what I can summarize here is that, like we humans, we live in a context of justification and question answer dynamics. So whatever we say, we try to justify, starting from whatever we say and whatever we believe. There's always justification we want to make. And as Alto also indicated, the ego can be viewed as the internal organ of that justification. And but we have to realize that the ego has both cognitive and motivational functions to justify the self. So that's how we are. We have ability to think and come up with, like, articulate that, and at the same time we can be motivated and we can motivate others. So the best thing what we can possibly do is, as they say, that harness the energy in the right form. So we need to be able to, we should at least strive to make sure that wherever there's an impulse to go and massage your own ego, we should try to control that. And that's how we have to behave in a social setting. And so the most important thing is to you direct your energy in the right way and form, and to avoid conflicts. That's the most important thing. So live and let together, and respect the diversity. So that is the message of today. And we are here for today's last presentation. And me, Alto Baba, and Fatrani, we're going to do a presentation. Peanut Butter Daddy, Fatarani, and Alto Baba for the last show and the final show of the night. Yeah, last. Yeah, and of course, if you liked what you heard today, including the song and the discussion, please let us know. And जैसे मैंने पहले कहा, we like the likes. But और अगर आपको कुछ feedback देना तो जरूर बताइए हमें. We love the love too. Yeah, show some love. And thank you, Jackie. Okay. Well, move this to 2 minutes, because this is Very long Long lead song. in for this particular song. Bada BGM. Haan, Yeah. 2 minutes. no, you cannot dance 2 minutes. जाते रहो बस No, just 2 minutes. 2 minutes. और 2 minutes और Yeah, it's a long song. और Make it 2 minutes. और जाओ और 5 सेकंड Yes. Ha. लगा लो This song where villain gets to dance also. Shakti Kapoor. Shakti Kapoor? Shakti Kapoor and Sanjay Dutt. Ah, your relative. They both don't know how to dance. Yeah, exactly. देखें जरा इसमें कितना है दम, थम के रखना कदम मेरे साथिया, देखें जरा इसमें कितना है दम, थम के रखना कदम मेरे साथिया. यहाँ पे शक्ति कपूर आएंगे डांस करते हुए नीतू सिंह के साथ. देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया. देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया. आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए, आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए. ऊपर चले आए हम वो नीचे रह गए, ऊपर चले
ऐसे हम नाचेंगे वो आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। शायर में हमें हमसा कौन है, जू 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 सारे शहर में हम ही हैं, हमसे कौन देखो इधर हम यही हैं, हमसा कौन है। देखो इधर हम यही हैं, हमसा कौन है। देखेंगे देखा है जादू क्या ऐसा है, यारों से जलना क्या, कांटों पे चलना क्या, कांटों पे चलने का क्या है फायदा। देखे जरा किसमें कितना है दम, आजा आजा भाई, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। Thank you so much. So, how was it, Jackie? Okay, I'll do the conclusion. So the best duo tonight is Fatirani, Baba, and Q Panda. Thank you so much, Jackie. And I would like to thank all the live audience, the people online watching. We do miss Deepa and Fortuny, and hope you guys come back to the next Saturday show. And it was really a good topic today about ego. And I hope you all enjoy the show as your co-host, Jackie and Pranab. Q Panda. Thank you all for watching. Thank you so much, Jackie. और जाते जाते यही कहना चाहूँगा मैं, जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि किसी शायर ने, बशीर बद्र साहब ने एक ऐसा शेर लिखा है which kind of rhymes very well with this theme, because when we are
self-obsessed and self-impressed and in love with ourselves, we kind of overlook everything else or everybody else around us and everything else which is happening around us. तो उन्होंने कहा है कि अपने चेहरे के दाग किसे नज़र आते हैं, अपने चेहरे के दाग किसे नज़र आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है. So with that message, we would like to end the show and let us know how the show was and any feedback we would appreciate it. And अगले शनिवार तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए. तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि और एक प्यार भरा